everyone, so let's move towards our today's topic, which is we have already talked about the arterial system of the upper limb, so you can listen that from the group, but in this recording we are talking about venous system of the upper limb. So basically there are two types of venous system. One is superficial venous system, which is present on in the subcutaneous tissue, and another is deep veins and deep venous system. And first we will talk about deep venous system because it's short and it's very easy. If you haven't listened the arterial supply of the upper limb, you have to listen that recording first, because अगर आपको arterial system of upper limb समझ में आ गया तो वही basically system है deep veins का, क्योंकि deep vein में भी deep venous system और वो होता है palmar arch वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद रेडियल और अल्नर आर्टरी बन रही है, फिर वो ब्रेकियल आर्टरी बन रही है क्यूबिटल फोसा से, फिर वो ब्रेकियल वेन बन रही है, रेडियल और अल्नर वेन आपस में मिलके ब्रेकियल वेन बन रही है, फिर ब्रेकियल वेन एक्सिलरी वेन एंड सो ऑन. बट in deep venous system there is something different, and वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ. बड़ा इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा cephalic vein, basilic vein. So these are arising from the dorsal side of the hand, but from that arising after the dorsal side of the arm, hand, they will enter into the forearm anterior side. ओके, तो ये पीछे से ओरिजिन होते हैं और आगे आ जाते हैं ओरिजिन होने के बाद. एक्चुअली हमारे हैंड में on the posterior side, on the dorsal side, there is a arch, and that arch is called as that arch is called dorsal venous network, and from that network dorsal veins are arising which are supplying to the phalanges and metacarpal. So that dorsal venous network, from the dorsal venous network, basilic vein and cephalic vein are arising. Basilic vein is from the medial aspect, and the cephalic vein is from the lateral aspect. Both are arising and enter into the anterior side of the forearm, and they will meet together in the cubital fossa by a vein called median cubital vein. Okay, median cubital vein. Then the basilic vein is on the medial side, so they will pass straight to the axillary vein into the axilla from the medial side of the arm. एक्सिलरी वेन मीडियल साइड ऑफ आर्म से सीधा जाएगी और डायरेक्ट एक्सिलरी वेन के साथ कनेक्टेड होगी, जबकि सिफेलिक वेन क्या करेगी, सिफेलिक वेन मीडियन क्यूबिटल वेन के साथ कनेक्टेड होगी बेसिलिक वेन के साथ. देन वो लेटरल साइड ऑफ आर्म के साथ जाएगी, देन वो डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल के साथ मूव करेगी, डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल के अंदर से मूव करेगी, देन वो एक्सिलरी वेन में कनेक्टेड होगी. देन वो मतलब ऐसा नहीं होता कि सिफेलिक और बेसिलिक वेन मिलकर ब्रेकियल वेन बना रहे, नहीं. ब्रेकियल वेन रेडियल और अल्नर वेन से बनता है जो डीप वेनस सिस्टम में होता है. सुपरफिशियल में बेसिलिक और सेफेलिक अलग अलग वेन होती हैं जो एक्सिलरी वेन में, यानी एक्सिला की जो वेन है वहाँ पर ड्रेन हो रही होती हैं. देन वो सबक्लेवियन वेन में जाती हैं, सबक्लेवियन वेन, फिर इंटरनल जुगुलर वेन, एंड देन ब्रेकियोसेफेलिक वेन, देन सुपीरियर वेना कावा विच इज़ कनेक्टेड टू द हार्ट. सो रिमेंबर दिस sequence that from the dorsal venous network, basilic and cephalic vein are going, and in the cubital fossa they are connecting by median cubital vein, but they are not forming another vein, they are going straight on their lateral and medial side, and they will meet together on the axilla and they will form axillary vein.
And axillary vein is also forming by the brachial vein, which is the superficial deep venous system. Then these three will enter into the axillary vein. They will form axillary vein. That axillary vein will form subclavian vein. Then subclavian vein के बाद internal jugular vein, then brachiocephalic vein, and then superior vena के बाद then heart. So हमने arterial system कैसे पढ़ा था? हार्ट से शुरू किया था और हम हैंड पे आए थे. वेनस सिस्टम बेसिकली हैंड से शुरू करना है और हार्ट तक याद रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज ले जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंड से हार्ट में जाएगा. सो यू कैन इजीली मेमोराइज इट. नाउ अनदर वेन इज मीडियन एंटीब्रेकियल वेन. We have said that from the dorsal venous network, two veins are arising, cephalic and basilic vein, which will enter into the anterior side of the forearm. But there is another vein which is not arising from the dorsal side of the hand. It is arising from the palmar side of the hand, and that vein is called median antibrachial vein, which is arising from the palmar venous network, and it is also on the anterior side of the forearm, and it is present on the middle of the anterior forearm and at the elbow. Okay, cephalic और basilic vein cubital fossa में आपस में connected थी median cubital vein के साथ. ठीक है, जो median antibrachial vein है, जो middle से आ रही है, बीच में से आ रही है एंटीरियर फोरआर्म के, वो सीधी आएगी, स्ट्रेट आएगी. देन दे विल डिवाइड इनटू टू वेन्स. ओके, एंड दैट डिवीजन इज लाइक मीडियन सेफेलिक वेन एंड मीडियन बेसिलिक वेन. मीडियन सेफेलिक वेन के साथ कनेक्टेड होगी, और जो मीडियन बेसिलिक वेन है वो बेसिलिक वेन के साथ कनेक्टेड होगी. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, so this is the process. Basically superficial vein, तीन veins होती हैं: basilic vein, cephalic vein, median antibrachial vein. Basilic vein, cephalic vein and median antibrachial vein, these all are present on the anterior side of the forearm, but their originating point is different. Basilic vein and cephalic vein are arising from the dorsal venous network, but the palmar or ventral venous network, from the ventral venous network, a vein is arising, that median antibrachial vein. These all are connected together. Okay, median antibrachial vein will connected to the cephalic and basilic vein. There is no continuation of the median antibrachial vein, but basilic and cephalic vein continues in the forearm, in the arm, and they will enter into the axilla, and then they will connect it with the axillary vein. So remember this concept. Deep venous system is similar to the arterial system of the upper limb, but the superficial venous system is something different. So guys, take care of yourself and study hard, work hard, and good luck. Bye.